हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम वुमेन्स रेसलिंग वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट आया था इस मैच के ऊपर। इट्स बिटवीन कैमिल एंड टेरिन। ये NWA वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियनशिप मैच है। ये 10 मिनट ऑलमोस्ट 11 मिनट का वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो। The following match is one fall with a 30-minute time limit. And it's for the NWA World Women's Championship. Introducing first, the challenger. Wait, hold on. So, in order to introduce me, it has to be like someone really special. So, sorry. Okay. There's no one more special than me. I knew. The way she dressed, she looks Without further narcissist. ado, introducing the challenger and soon to be new women's champion from New Orleans, Louisiana, Taryn Terrell. Camille. One more thing. So directly after this Same. match, I did bring my picture, so you can go ahead and put these in the belt, okay? Okay, thanks, bye. Don't you stay away. Okay. And from Durham, North Carolina, she is your NWA World Women's Champion, the Brickhouse Camille. I do like the confidence that Taryn Terrell had. She brought her picture Or else I to can put say she in has to the Brick overconfidence. itself. As you can see, the champion gets to have their picture inside that title belt, making a very special title in the entire sport of professional wrestling. And Taryn doesn't seem to be intimidated in the least, standing across the ring from Camille, our NWA Women's Champion, and she doesn't seem phased at all. She seems fairly confident tonight. Oh, wait a minute, she's got the belt. She's got the strap. Oh, no. Sure That's one thing you don't do. You don't take another champion's belt, put it around your waist like that. Yes. That's disrespectful. Yeah. Or is it a part of her game plan? Is she getting into the mind? I don't think She's gonna anyone get it can from get it. I don't Camille. think anyone has been able to If anyone penetrate the can, mind. it's Taryn Terrell. She knows how to grind your gears. And the bell is rung in this main event matchup. Well, I think you have to wonder, though, if the situation with what happened with Tom Latimer earlier is on her mind. You know, I know what you're talking about, the discussions that they were having as he's going ahead into that matchup. Yeah. That'll be next week. But, you know, she's got to be focused at the task at hand, and that task She's is completely Taryn Terrell. princess, yeah. Attitude से भी लग रहा And है Taryn princess Terrell को. did not want to... I think she was regretting that test of strength. But, Okay. Tim, as you mentioned before, You want on some her personal muscles there? record, she's strengthened up, but can she do it? Well, I don't quite know how to respond Please do that to once more. her confidence. And I would never take that away, but She's backing Camille's away. proving what kind of champion she is. And I don't think I would want to come in and you know, in should not Arkansas be terms, I showing wouldn't want off. to come in and poke the bear. Is that I backing? wouldn't want to give her that motivation. And look at that, she's already done so much damage to the hands of Taryn Terrell this early in the matchup. She's asking where her water cup is. Well, as Joe pointed out, you have to stay hydrated. Yeah. And that handed hit Oh, to wait a Robert minute. She's King. actually Wait a getting her. minute. Wait a minute. Can you do that? This is a first. Taking a water break? It's Is coming this up legal? with first drinking water in the middle of the match. That did not sit well with the champ at all. I hope it was worth it. I hope Look at your Camille's thirst, face. I hope your thirst was quenched. Oh, steps out of the way. Up onto the second row. Oh, she was She looking went for that monkey flip, yeah. What is She's he still trying to hanging on. do? Oh, Like, wow, look at the power. God, that I can see he's the winner of this match. Before I can even tell. Fisherman suplex with the release. I don't know how the match will go on, but I can say taking her time. Camille will be the winner. Kind of savoring this She moment. will Oh, hold her collapsing match, Taryn Terrell. world champion match title again. You heard the scream from Taryn. Do you blame her? No, I'd be She terrified too. means business. Camille means business. I'll be back.
This might end up being one of the most one-sided women's championship Why? matches we've Why ever it's seen. not fair? It's a match. Come on, you need Unless to fight. Taryn is able Stop to. know showing what off you your can do. princess attitude. I've seen Taryn tactics before in the past in her matches, but I don't know if it's kind of too late at this point. I'm not sure the damage that's been may have already been done enough to Taryn. If she, I don't But she's tough, I'm telling you. I I've believe been- that. Who you want? I believe that. I Who you don't want to see help? this as a cat and mouse thing. I don't think she's setting her up for something. I think that Right. Camille is just that dominant. And I don't mean just dominant with Taryn. I mean, she has shown her dominance in With everybody as a she's been in champion. the ring with, yes. Backbreaker by Oh Camille. my god. Slow, methodical, and brutal. That slight smoke Camille is doing. Camille's just not phased at all. She's got her tied up in the ropes now. We've seen this from Camille. Blow to the chest. Another. And just repeated blows to the chest. Knocking the wind out of Taryn Terrell. Oh, and she's just collapsing. I was just going to say, she collapsed her. Oh, we've seen this from Camille too. Oh, not the neck wrench. Trying to rip her head from her shoulders. And making sure everyone can see Looks her like head breathing. massage. She's completely made up, yaar. You know, eyelashes. Oh, there she goes. Okay. The jawbreaker. Jawbreaker right there. That's really the first offense we've seen since the opening of this match. Oh, look for the front. Oh, got caught mid-air. Her Mid-air. back is like so red, Big yeah. slam. See, to be fair, I can say that Camille looks a lot more bigger than Terry, and also she looks, She is annoyed. she has more Taryn, techniques. I mean, she's got fight in her though. She's got that fight in her. And she's got some more water. This is third or fourth time Stomp to the midsection. section. And honestly, this crowd's loving it. They're loving the NWA World Women's Championship. I mean, if there was The an audience was opportunity going for Taryn ballistic. Terrell, I They're just don't shouting. know where it would be to bring this match. I don't know what She's she's the thinking. most Actually. hydrated wrestler I've ever seen. She sure is. Oh, and spinning into the face. Maybe that's it. I think they got into the eyes. There it is. Oh, distraction. Shoulders down. Only a one count. I was thinking like might be she's using that drinking of water as a Once again, distraction. shoulders down. 2 count on Camille now. Camille went with a back kick. Good. Oh my god, that was so... Taryn into the cover again. 1 count on the champion. Which of these That women is going to go into head the must Crockett have Cup hurt so as much, the yeah, like, NWA to pull her Women's hair World back. Champion? Taryn Terrell is showing fight here. She's got fight. No. Yeah, I mean, she's showing it against our most dominant female wrestler. Okay, let me rephrase that. Clothesline. One of our most dominant wrestlers, female Oh or my male. god, welcome She's this. showing fight right here. And she has been heavily preparing herself Yes, she has. for this match. Okay, I've let's seen go and her drink some videos more where water. she's been in the gym doing some heavy lifting because she knew she was going to be standing across the ring fighting Her with the water likes cup of is someone also the size matching of with her Camille and the strength of dress Camille. costume. Now it's a bit of a stalemate after that double face buster. What does she say? And please. That's what it looks For a like. kick. Right off his feet. Taryn face first into the top turnbuckle. Now Camille stomps to the midsection. Now the smile on the Oh, yeah. champion. She's feeling confident. He Oh, strikes wait a minute. Taryn's still in this game. Oh, There it is. flying neck That may be what she needed. She doesn't go back. She's got some tricks, but so close. That was her best Strength shot so wise. far. Look, it looks like Taryn can't yeah, she's believe sure. And we are also sure. It's only that she 2. kicked out of that. No. She said, I me thought it was too. 3. She can't believe it. She thought she was going to have Camille in this match with
with that move. She may have snapped. She may have just taken this to another Looking level. like street fight here That's instead exactly of what she needed. wrestling. I've seen Taryn snap before, and the crazy definitely comes out when Taryn snaps. Oh, no, don't tap out. No, Camille, you are better than this. And now the No, champ is trapped. come on. She's got nowhere to go. Center of the ring. You want to tap? She broke. Okay. Oh, Just muscling herself he up. knows. Terry The knows. power and the strength of Camille Oh. Stampede. Okay, finish the match. So, like, I know, like, for Camille Camille, knows she she's a can. fighter. I mean, can fight. this was not a joke. Come on, don't waste any more time. Taryn was If she looking for that Taryn connects, cutter. if she connects, we know what this means. She's all Oh, she got it. dead to rights. Is that her power move? And Camille Okay, gets yeah, it looks like it's a power move for Camille. And still, NWA World Women's Champion, the Brickhouse, Camille! We got to give it to Taryn. I mean, it was a great effort by her to be in such a high-profile championship match, but Camille's Camille. Yeah. She's been dominant with everybody she's ever been in the ring with. Standing tall, going into the Crockett Cup I have as a lot to say your about this match. NWA Women's World Champion, holding the I belt high expected above her Camille head to and finish getting a this off standing early ovation here at because, Balor Hall. you know, wait. Okay, I can see that Camille has lot more strength. She looks bigger and has lot many techniques or tricks up her sleeve than Terry. Like पूरे मैच में ऐसे ही दिख रहा था कि she can outdo Terry within few minutes, but almost 6-7 minutes तक गया यार. That was surprising for me, but yeah, Terrell was able to stand her, like, take that time, 7-8 minutes dragging of that fight. But अगर seriously fight किया जाता तो I guess like hardly 2 या 3 मिनट तक रुक पाती वो. Because Camille, we can see she's very straightforward, she's very serious when it comes to matches. दिख रहा था उनके professional movie पे. But and I think it would be fair for me to say that Terry lost this match because she was overconfident and she was like not at all taking this match seriously. Because जिस तरह से वो बार बार like पानी पी रही थी जाके बीच बीच में and right in the middle of the match 3-4 बार पानी पी चुकी है यार. And it was kind of she's not considering that this match is that important or that serious. वो मुझे थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल लगा. एंड ऑल्सो वो बेल्ट का जिस तरह से वो टाइटल बेल्ट है ना उसको वो जिस तरह से अपने बेस पे लगाने की कोशिश कर रही थी even before she won the match or even before the match started. So that was kind of disrespectful to the one who's holding that match, that title. So वो मुझे थोड़ा लगा नहीं करना चाहिए था. But she is like kind of arrogant बोल के दिख रहा था, narcissist kind of behavior दिख रहा था उसके ऊपर. And that was already put me like okay, I'm not on Terry's side. Camille के side आ गई यार, उसकी वजह से मैं इसकी side आ गई. But Camille was so good यार, उनके fighting methods हो जाए, like the decisive fight she put forward, like बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. जो भी पंचेस या फिर जो भी किक्स वो कर रही थी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि मुझे मैच को जीतना है, जल्दी से फिनिश ऑफ करना है बोल के. लाइक या most of the matches, not most of the, I can say like every match is like scripted. I know that. And बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं इवन दो दे आर स्क्रिप्टेड, बीच बीच में इम्प्रूव करना पड़ता है. इम्प्रोवाइजेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन हाउ द किक्स वेंट और हाउ द अपोनेंट इज बिहेविंग. उससे उसके ऊपर देख के इम्प्रोवाइज करना पड़ता है स्टेज पे सबके सामने लाइव. सो वी कैन सी दैट कुछ बीच में लग रहा था कि दे डिड नॉट प्रैक्टिस वेल. टाइमिंग थोड़ा ऑफ लग रहा था, जिस तरह से किक्स मारने का हो जाए, जब वो रिंग के ऊपर वो बेड के ऊपर इस तरह से हिला के छोड़ रही थी, जब कैमिल बीच में बेंड थी ना, ये फिर वहाँ जाके फिर वापस आने वाली थी, तो शी वॉज जस्ट वेटिंग. कैमिल वॉज वॉचिंग हर व्हेन शी कम्स एंड किक्स मी बोल के. सो वो थोड़ा स्लाइटली ऑफ लगा मुझे, बिकॉज इस तरह के मैचेस में इवन दो वी नो दैट स्क्रिप्टेड, बट वी वॉन्ट टू while watching we want to see it as really happening. So anyways वो थोड़ा मुझे लगा. I don't know how many of you guys have
ऑब्जर्व इट, बट आई थिंक लाइक मैंने पिछले मैचेस पे जो भी इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स मुझे लगे या फिर मेरी तरफ से मुझे जो लगा, मैंने कहा था कि इस तरह के मैचेस इवन दो दे आर स्क्रिप्टेड, प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया होगा उन्होंने, मैच के बिफोर जो प्रैक्टिस होती है कि इस तरह से मैच को हमको दिखाना है सबके सामने, जब फाइट होने वाला होता है तब हम ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे बोल के पहले से वो सब प्रैक्टिस करके रखते हैं। बट कभी कभी टाइम रिस्ट्रेंट होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है या फिर टाइमिंग ऑफ हो जाती है बीच बीच में, अपोनेंट कुछ और करने जाता है, कुछ हो जाता है, भूल के कोई एक स्टेप करने, एक पंच मारने की जगह दूसरा पंच भी क्या, वो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट वी कैन सी दैट थोड़े थोड़े मैचेस में बहुत ऑब्वियस होता है, थोड़े मैचेस कवरअप कर देते हैं, इम्प्रोवाइज कर देते हैं, सो वी वोंट बी फीलिंग दैट यार ये कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड है। बट या यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग, अगर आपने मेरे प्रीवियस जो भी मैचेस देखे हैं इस तरह के जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। बट एनीवेज I know like most of the fights are for our entertainment, even though they are for our entertainment, इस तरह के मैचेस, रेसलिंग मैचेस मोस्टली उनको पेन होता है, दैट्स फॉर श्योर। लाइक वो बाल को पकड़ के उठाने का हो जाए, जिस तरह से वो जमीन के बाल को पकड़ के नीचे वो रिंग के ऊपर फेंकती है उनको, जिस तरह से सिर को लगता है, थोड़ा तो ब्लड फोर्स जो भी हो जाए, लाइक उनको दर्द होता है, वो होता है ना, जिस तरह से सडनली गिरने की वजह से दिमाग हिलने की जैसा फीलिंग आती है। सो नॉट कम्प्लीटली जितना वो साउंड इफेक्ट की वजह से या फिर जितना वो हम फील करते हैं कि इतना होगा दर्द बोल के, उतना नहीं होगा, बट होता है, थोड़ा तो होता है। सो इवन दो दे यूज़ प्रॉप्स लाइक चेयर यूज़ करें, किक्स हो जाए, फिर बेल्ट से मारे, कुछ भी हो जाए, लाइक उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, बट फिर भी उनको वो दर्द वो दिखाना पड़ता है उनके एक्सप्रेशंस पे। एंड साउंड जो भी आता है वो मारते वक्त उसको हम जब देखते हैं ना, वो एक्शन को और सॉन्ग को एक दोनों मिला के देखते हैं, तो हमको वो दर्द का पता चल जाता है। लाइक वी इमेजिन दैट ओह माय गॉड दिस मस्ट हैव हर्ट सो बैड ओके, बट हर्ट होता है उनको, बट उतना नहीं हर्ट होता है, थोड़ा तो होता है। एंड आई कैन सी दैट टेरिल्स बैक वाज रेड, लाइक जिस तरह से उठा के पटक पटक के उनके पीठ के ऊपर गिरा रही थी, सो वो उठा के फेंकने का भी थोड़ा दर्द होता है। एंड दे आर वेरी एथलेटिक, जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उठने का, ऊपर से गिरने का, छोटी छोटी इस तरह के जो भी दर्द होते हैं वो सह जाते हैं, बिकॉज दे नो उनके प्रोफेशन यही है। सो इवन दो वी कैन सी दैट दे आर नॉट इन लॉट ऑफ पेन, बट दे आर उनको पेन होता है। एंड वी कैन सी डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी यूजेस, उनके बॉडी के ऊपर जिस तरह से ब्रूज होती है, रेटनिंग होती है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कितना दर्द होता है। बट एनीवेज मैं इसके बारे में इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि पिछला जो मेरा मैच थे, जो रिसेंटली जो भी मैचेस देखना शुरू करती हैं मेरे रिएक्शन चैनल पे, वो क्वेश्चन करते रहते हैं, बार बार कमेंट्स करते रहते हैं कि ऐसा है बोल के। सो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देम ईच एंड एवरीबडी वन आंसरिंग रिप्लाइंग देम, आई थॉट एक मैच में बता दूँगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मैं जो रिप्लाई देती हूँ ना, आपको क्लियरली कभी कभी समझ में ना आ पाए, जिस टोन में मैं बोलना चाह रही हूँ आपको शायद वो क्लियरली क्लिक ना हो पाए कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं ये सब चीज़ें एक ही रिप्लाई में डाल के बोलने की भी कोशिश करूँ, फिर भी आपको वो मेरा इंटेंशन है जो मैं बताना चाह रही हूँ शायद आपको क्लियरली पता ना चले, आपको समझ में नहीं आए। सो आई थॉट आई पुट इट ऑन द वीडियो। सो दिस इज़ द मैच। सो मुझे अच्छा लगा है, लाइक स्टार्टिंग में इस तरह से टेरिल अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, वहीं से आई स्टार्टेड टू डिसलाइक हर अ बिट, बिकॉज मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी। कॉन्फिडेंस रखना हाँ सही है, ठीक है, अच्छा लगता है, सब लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। बट शी वॉज काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट एंड डिसरेस्पेक्टफुल, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था, और थोड़ा मुझे मेरे लिए तो सारे लोग नए हैं, जो भी मैचेस देखती हैं बहुत सारे नए नए फेसेस हैं। सो आई डोंट नो एनी ऑफ देम, सो आई रियली डोंट नो लाइक कितने मैचेस जीत चुके हैं, किसके फैंस ज़्यादा हैं, फिर ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं। सो डिपेंडिंग ऑन द मैच सोल स्टैंड ऑन मैच इटसेल्फ आई फिगर आउट लाइक किसको मुझे सपोर्ट करना है तो किसको नहीं करना है।
उनके एटीट्यूड से ही मैं सपोर्ट करना शुरू कर देती हूँ. सो या फॉर मी कैमी वॉज ऑलरेडी अ विनर बिफोर स्टार्टिंग द मैच एंड शी इज़ एक्चुअल विनर. मुझे अच्छा लगा यार उनको जीतते हुए देखना. एंड या अभी भी मेरे दिमाग में उतर रहा है जब भी मैं टेली के बारे में सोचती हूँ. प्रिंसेस ट्रस्ट का दिख रहा था एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर वो याद आ रहा है. फाइट का एक भी स्टेप मुझे याद है यार का. बट एनीवेज आप लोग बताइए आपको क्या लगा कैमिल और टेली के मैच को देख के. हु वाज योर फेवरेट एंड डिड यू वॉच एनी अदर मैचेस ऑफ दिस टू? इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले मैच में. तब तक के लिए बाय.